The idea behind taking this discussion is those who are starting the preparation at present or those who have completed the foundation batch, they are going to attempt next year, let's say 2024 attempt, or those who have even given this year's mains and could not have a satisfactory attempt. For them, this is going to be very helpful. Why? Because we are going to provide you strategy for next year by doing the trend analysis. Okay. Now, trend analysis means, and why it is required? Yes, it is required because UPSC has some tendency to ask certain kinds of questions from certain areas. Once we identify that, then our efforts will be streamlined in the right direction. Otherwise, we know that there are bulky books, n number of notes of n number of classes in that market, and we are basically facing lot of trouble in identifying relevant material, study material, right? कि क्या पढ़ाई करें, ये दिक्कत है, and that's why trend analysis is very important, so that we identify the key terms, or we can say key areas of this particular syllabus or the subject, and we focus more on those areas. Okay? So from geography, we are aware that what is the syllabus for geography? GS1 paper, and very important. Why we are saying very important? How much mark UPSC allocates for geography in GS1? Yes, online students, write it in the comment box also. ठीक है, अगर मैं कुछ response आपसे पूछ रहा हूँ तो आप comment में बताइए. In last 5-6 years, there has been trend that UPSC is asking 100 marks question for geography. 100 marks out of 250. And how they are asking? 4 questions, 10 marker, 4 questions of 15 marker. This has been the standard trend and UPSC has not changed it in last 4-5 years. ठीक है, इसको हम ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं कि इतना सिग्निफिकेंट वेटेज है ज्योग्राफी को. विद इन दैट ऑल्सो विल सी द सिलेबस टॉपिक वाइज. क्विकली सी द सिलेबस. जनरली आई टेल or divide this syllabus into 4 parts. One is physical geography. You can see the first one, salient features of world's physical geography. Why we are discussing syllabus briefly? Why? Because उसके बाद ही आपको ठीक से ट्रेंड एनालिसिस समझेगा कि कौन से सिलेबस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए और कैसे डील करना है. Salient features of world's physical geography. Now, it is including Indian geography. ठीक है, when we say world's physical geography, it is including India's physical geography also. ठीक है, I will tell you how the questions are being asked from the Indian physical geography. So, all physical geography including geomorphology, climatology, then oceanography and biogeography. All these are part of physical geography. Then second part of the syllabus is resources. Okay, so distribution of key resources across the world. Now it is saying that including Indian subcontinent. So that means India also, including. Distribution of resources. This is one important topic. Third important topic is location of industries. And it is saying clearly factors responsible for location of industries. And it is saying primary, secondary, tertiary sector industries. Okay, so it can be primary sector related to agriculture and allied activities, or we can say that mining, quarrying and lumbering activities. It can be secondary, that is industry and purely manufacturing activity we can say. Tertiary we can say service sector, including transportation and other services, financial services, service sector. Okay, and including IT sector, service sector में जिसको हम बोलते हैं. Last to last year there was question on IT sector. So this is the third important. Fourth syllabus topic. Okay, or the fourth division is important geophysical phenomenon. Now this includes natural hazards. This includes natural hazards like cyclone is there, earthquake is there, volcanoes are there, tsunami is there. So some of them mentioned here, but UPSC can ask beyond this. ETC लिखा हुआ है syllabus में. Like they are already asked cloud burst and its mechanism. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके beyond जाके भी आपको तैयार करना है syllabus के. Okay, so this is important one, and the sub part of that is the contemporary climatic phenomenon like climate change, global warming and its impact on flora and fauna. ठीक है,
तो ये देख सकते हैं आप, geographical features and their location changes in the critical geographical features like water bodies, ice caps, and in flora and fauna, and the effects of such changes. Now, every year UPSC distributes these 8 questions in a balanced manner. Like they will ask 1 or 2 questions from physical geography, they will ask 1 or 2 questions from distribution of resources, then 2 questions from industries, 2 questions from these 2. Okay, so there will be balanced aspects, so you cannot skip any particular syllabus topic here. I am going to explain you how to prepare for these 4. ठीक है, कैसे तैयारी की जाती है इसकी, ठीक है. बट बिफोर दैट लेट्स सी हाउ यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेंड सिंस 2017 यूपीएससी हैज केप्ट similar trend of asking question. 4 question 10 mark, 4 question 15 mark, 100 marks total. Is this clear? So next year also we expect that UPSC continues this. ठीक है, 100 marks is very significant. 8 questions. Okay, now let's talk about the weightage given to different 4 sections. I have told you I divide this generally like this: salient features of world physical geography, then important geophysical phenomenon, distribution of resources, and location of industries. So generally it balances. You can see here 3, 1.5, 1.5, 2. You may be saying कि 1.5 question कैसे होता है? See, there was one question which was having the mention in the second part of the question about, we can say that this phenomenon, natural resources, and the first part was related to first part was related to resources, second part was related to, we can say that natural hazards. कौन सा था वो क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ओवरऑल वेटेज मैं पहले बताना चाहता हूं. यू कैन सी दैट टिल द डेट कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस हुआ है. 25 क्वेश्चंस. What is that? Important geophysical phenomenon and this climate change and global warming aspect. So more focus is given by UPSC in this syllabus topic. Thereafter, the second largest, key natural resources, its distribution. And then we can say that the physical geography and the industries aspect. Now this is trend analysis. This is very important. Okay, and accordingly we should give weightage while preparing these syllabus topics. I am going to explain you how to prepare all these syllabus topics also. Now briefly let's have a look at this year's question paper. In one page we have tried to add all questions, and I am going to just mention the difficulty level, the syllabus topic. I am not going to discuss in detail these questions. As earlier we told you, the detailed discussion of all these questions will be taken later on. Okay. First of all, if you remember last year's question, they were a little bit moderate to difficult in terms of difficulty level because these questions were applied in nature. Okay, applied in nature. Like for example, the natural resource potential of Deccan Traps. आपके जो भी रिसोर्सेस है, जहां से भी आपने पढ़ाई की है, फाउंडेशन बैच हो, जो भी आपने पढ़ाई की है, क्या एक जगह पे आपको इसका आंसर मिल रहा था क्या? Did you find the answer to this question at one place in any reference book or resource? No. So that means we have to apply our mind, and we can say that organize, structure our information, understanding about that topic, and then write the answer. This is applied in nature. Okay, wind energy potential, right? Or the primary rocks. It was easy, but students were confused at that time. इस प्राइमरी रॉक पे 150 वर्ड्स क्या लिखेंगे, है ना? रॉक्स का एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें रॉक साइकिल पढ़ाया है एनसीईआरटी में. प्राइमरी रॉक्स का 2 एग्जांपल दिया है, इग्नियस रॉक्स होता है, इतना ही बताया है. 150 वर्ड्स कैसे लिखे, इसको क्या लिखे? That was a challenge at that time. So yes, comparatively this year you can see largely it is static, and plus current or contemporary aspect. So it is not having any applied aspect largely involved in this question. That makes this question paper easy to moderate.
अप्लाइड मतलब वहां पे 2 मिनट आपको सोचना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, and then we have to organize, structure it according to demand and command of the question. Now, very straightforward questions. Discuss the consequences of climate change on food security in tropical countries. इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, just list down the consequences. ठीक है, उसमें कोई आपको डिफिकल्ट वाला एस्पेक्ट नहीं है कि कॉन्सेप्ट पूछा है वो नहीं समझ रहा है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पूछी है दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. So it was not involved. So the syllabus topic we have mentioned here, कौन से related है, किससे related है, and the nature of question. Now, why we are saying contemporary? Climate change is a contemporary phenomenon. So whatever the developments that are happening, we call it as a contemporary development, climate change से related. It can extend to, we can say that 10 years, 15 years back also. ठीक है, तो एक साल से 10 साल, we call it as contemporary phenomenon, climate change, global warming and all. Okay, second question, why the world today confronted with the crisis of availability and the access to fresh water? Again, the natural resources, water resources, natural resource. And every year UPSC asks one question either in GS1 or GS3 related to water resources. तो क्यों ना हम हमारे पास क्वालिटी डेटा वाटर रिसोर्सेस के ऊपर और कुछ रिपोर्ट्स और उसके फाइंडिंग्स, इंटरनेशनल बॉडीज के जो रिपोर्ट्स होते हैं वाटर रिसोर्सेस से रिलेटेड, तो वो आप लिख के रखिए एक जगह पे. आई एम टेलिंग यू एवरी ईयर यूपीएससी आस्क्स वन क्वेश्चन रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेस. सो यस, इट इज कंटेम्पररी एस्पेक्ट. नो, fjord, फिजिकल ज्योग्राफी. Now, every year UPSC asks one question out of 20 questions in GS papers, which makes students uncomfortable in the examination hall. एक क्वेश्चन होता है ऐसे, ठीक है, हर एक पेपर में, अगर देखते हैं आप सारे पेपर, but try to understand fjords. You have read about it in NCERT, 11th standard NCERT, that it is a glacial landform. Okay, and how it is formed, this thing you know. The second part is completely generic. What it is saying, why they constitute some of the most picturesque areas of the world. Those who are watching Hollywood web series, Game of Thrones हो या कौन सा भी हो, ये सारे शूटिंग्स उधर ही होता है. देखिए आइसलैंड में, नॉर्वे में, ठीक है, तो वहां पे ये सारे fjords ही दिखाता है. गेम ऑफ थ्रोन्स जिसने देखा है उसको सब पता है, ठीक है, ये सारे fjords का एग्जांपल, वो जो है वहां पे शूटिंग होता है, कोस्टल एरियाज का जो है. ओके, कैसे होता है fjords, कैसे दिखता है, यू नो राइट? हाउ डज इट लुक लाइक? बेसिकली व्हेन द ग्लेशियर इज एंटरिंग इनटू डायरेक्टली ओशंस, सो दिस इज अ काइंड ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म, एंड द हिल इज हैविंग क्लिफ, एंड इमीडिएटली देयर इज ओशन, दैट इज fjord. ठीक है, तो अगेन आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स ऑफ दैट, बट आई एम टेलिंग यू कि जितना लगता है उतना मुश्किल नहीं है. I told you, it is just to make it the student uncomfortable in the examination hall. Those students who are mature, smart, they can easily tackle this question also. Now this one also, Purvaya. I told you world geography includes Indian geography also. This one, Indian climate or climatology. Okay, as the name suggests, Purvaya, those who have learned monsoon phenomenon, there are two branches. We know that Bay of Bengal branch turn into, we can say, eastern, from east to west direction along the foothills of Himalayas over the North Indian plains. तो वो logic भी use कर सकता है. Second part is generic in nature. Again, student will write something. Cultural ethos. Culture ethos क्या होता है? Festivals, food, attires. All these things are, we can say, music, dance. All this is cultural aspect. ठीक है? So one can easily write the generic content in second part. It's fine, it's accepted. कुछ ना लिखने से कुछ तो लिखा हुआ बेहतर ही होता है. एक दो मार्क ज्यादा ही मिलेगा आपको. Understood? Yes. Now, yes, physical geography, why I am telling you, it is static. ठीक है? Second part is applied. How cultural influence. ठीक है? Thereafter, comment on the resource potential of long coastline. Now, can we say that now this is the new trend that UPSC has adopted?
to ask the resource potential of different regions of India. Last year they asked Deccan traps. Now this year they are asking coastal areas. Understood? Second thing that you should clearly understand, they can combine the 2 or more syllabus topics of not only geography but all the syllabus. Like GS3 मैं आपको बताऊंगा कैसे वो combine कर रहा है. Here also they have combined 2. Highlight the status of natural hazards preparedness in this area. Second part is related to natural hazard. First part is related to resources. So they combined in one question itself. इसलिए मैंने 1.5 किया है जब ऊपर लिखा था. Understood? Okay. So yes, of course, we know that which natural hazards that our coastal areas are facing, including cyclone or coastal erosion. Last year disaster management में पूछ लिया GS3 में coastal erosion. Okay. So that is, we can say, one of the natural hazard or disaster we can say. Then storms are there, storm surges are there in the coastal area. Tsunami, again we can say it is vulnerable to tsunami also. ठीक है, तो coastal areas are vulnerable to these natural hazards. One can easily write this. Fine. Identify and discuss the factors responsible for diversity of natural vegetation. Biogeography of India. Very simple, static, NCERT based. Factors we know about for the natural vegetation. The main important factors are climate and soil only. Okay. Climate, temperature and moisture, and then the soil. These are the main. Give example. Identify the factors and discuss. For every factor you give example. Natural vegetation of India. Okay. Including slope as a factor. Western slope of Western Ghats or the southern slope of Himalayas. Dense forest. Northern slope of Himalayas. क्यों? क्योंकि southern slope is more exposed to sunlight as well as rainfall. More rainfall. ठीक है. So yes, now you have understood physical geography से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं. 1, 2, 3. And they are static and applied. You can see static applied, static applied. So it is expected that whatever you are studying as a reference book, first thing is very clear, the conceptual understanding. And second is application of those concepts. When I say applied, application of those concepts. Like the second part you can see, assess the significance of wildlife sanctuaries in the rainforest regions. Now I am telling you, students are going to make mistake here. Students are going to write the examples of wildlife sanctuaries which are outside the rainforest areas. कोई भी general example लिखेंगे यहाँ पर. Rainforest areas कहाँ पर है इंडिया में? Western Ghats and Northeast. And we can say that the Andaman and Nicobar. Okay, Andaman and Nicobar is also part of India. Don't forget about it. It is having equatorial forest, no? Tropical evergreen forest. So we call it as a rainforest. There also we have this national parks and wildlife sanctuaries. ठीक है, तो इनका significance बताना है. तो students will write the significance, but specific examples लिखना मुश्किल हो जाएगा students को. They will write about Nilgiri, Western Ghats and all these things. Okay, but yes, fine, attemptable again. I am saying that all questions are attemptable. ठीक है, a well-read student will attempt all questions. Now, why did human development fail to keep pace with the economic development in India? This is purely applied question. ठीक है. Now you must be thinking कौन सा syllabus topic से है ये? अब मैंने लिखा है factors responsible for location of industries. See, human resource or human is an important resource for location of industries. Simply economic activities. Okay. And human development is related to human resource. Okay, human development is related to human resource, and the important indicators for human development are health, education, per capita income, or we can say that the skill development and all these things. ठीक है. In India, we know that all these indicators are problematic. ठीक है. So can we agree with this statement? Yes, it fails to keep a pace with the economic development. We know that economic development is focused more by the present government through investment in the infrastructure and other aspects rather than investing more in the health and education sector. Skill development. ठीक है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कम है, that's why इसका ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है.
just I'm simply telling you, it is applied question. We have to think about it. सारे क्वेश्चन में से मुझे लगता है सिर्फ ये क्वेश्चन है जहां पे स्टूडेंट को सोचना पड़ा होगा, ठीक है. अदरवाइज all 7 questions, remaining questions are pretty straightforward. The 7th one was like completely right about green revolution, implicitly, explicitly नहीं बोला है उन्होंने, right? From being net importer in 1960s, India has emerged as net food exporter in the world. Provide reasons. Green revolution. So whatever the measures were being taken in during green revolution and after that, till the present time also we can say, including extension services and all, mechanization of agriculture, वो सारी चीज लिखी है उसमें. Static part है, basics है. Okay, so now you have understood. So can we tag this question paper as moderate, easy to moderate? Geography section. Is everyone agreeing with me? Online students. हाँ. Yes, because the primary activity, agriculture. Okay, they are asking reasons, no? So they are asking reasons for location of which industry. They are asking about the agriculture, primary activity. We have to understand and link to our syllabus topic. नहीं तो हमें मुश्किल हो जाएगा पढ़ाई करना. Agriculture is a primary activity. Okay, so we have to understand that it is linked to that part. ठीक है, दूसरे सिलेबस टॉपिक से ये लिंक नहीं करेगा, ठीक है, फाइन. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू फॉलोइंग एवरीवन? यस, वी विल शेयर दिस पीडीएफ आल्सो लेटर ऑन, ठीक है. व्हाट अबाउट दिस वन? ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चंस, ऑल दीज क्वेश्चंस आर डेल्ट इन डेप्थ इन द फाउंडेशन बैच क्लासेस. ज्योग्राफी के जो हम फाउंडेशन बैचेस क्लास लेते हैं सारे होता है. ऑफ कोर्स वो पूर्वैया इज द रीजनल नेम, सो of course the faculty may not be taking that name in the class as a Purvaya, but surely the monsoon phenomenon is in depth explained, and how the Bay of Bengal branch is turning to its, we can say that the western direction, and all these things are explained there, right? So not to worry about that. Look at this, the ED lectures that we have at Lukmaan IAS, contemporary and current developments, how they are covered, climate change and all these things. So this year, 2022 November month, we had this ED lecture, and it was related to how climate change is affecting the food production over the world. Is it not directly linked to the first question, for the जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, consequences of climate change on the food security, ठीक है, food security in tropical countries, ऐसा specific पूछा है हमने पूरे वर्ल्ड का इसमें. Look at the question that we have asked in the Hindu analysis also. Explain the link between climate change, food security and the health. We were expecting question either related to health or food security. Question उसमें आ गया है. Okay, so for contemporary and current developments, the current affairs classes at Lukmaan IAS, be it the Hindu analysis or ED lectures, they are very, very important and relevant. I'm going to tell you the relevance in further questions also one by one. About the test series, the questions. Why is the world today confronted with the crisis of water availability? As we know that every year UPSC asks the question related to water. In our test series, we deliberately asked one question related to water. This year there was this report related to lakes, and the climate change is shrinking more than 50% of the world lakes. ऐसा उन्होंने फाइंडिंग. देखिए, critically evaluate the impact of shrinking lakes of the world due to climate change and human activities. There was this question, one water approach was in news. Okay, one water means considering the complete water that is circulated through hydrological cycle. We have to understand it in integrated manner for water conservation aspect, not in isolation. ठीक है, जैसे वन हेल्थ अप्रोच आप पढ़ते हैं ना न्यूज में, वन वाटर अप्रोच वाज आल्सो इन न्यूज. वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन दिस टर्म, बट एनीवे व्हाटएवर द कंटेंट वी आर गोइंग टू राइट, इट इज ऑन सिमिलर लाइंस. फाइन. सो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दिस ईयर्स मेंस एग्जामिनेशन नाउ 2024? You all are going to give mains, right, next year? So how do we prepare for geography section?
Yes, कैसे तैयारी करेंगे? The first and foremost thing in geography is be well prepared with the physical geography and its concepts, world as well as India. Okay, be it geomorphology, climatology. Climatology ज्यादा फोकस करते हैं वो. इस साल उन्होंने इंडिया का पूछा. They generally ask the concept related to climate in world geography. Okay, although last year they asked from climatology, they asked this cyclone and all these things as a part of natural hazards. So color coded system they asked last year. That was part of disaster management. Okay, but fine. Focus more on static part, concept clarity and the knowledge aspect. Okay, why? Because this year they asked more on the static part. So we have to cover it thoroughly. Then follow current affairs for geophysical phenomenon. Then climate change and economic geography also. Why I am saying economic geography? Because if suppose something in news, like critical minerals were in news, electric vehicles के लिए, batteries के लिए, so UPSC will ask distribution of critical minerals. ठीक है, from the static aspect they will ask, but it is in news. So economic, human development or human resource or economic development, वो news में रहता है हमेशा. So cover that. Then you need to have your own handwritten notes for all syllabus topics. Okay, when we'll have the detailed discussions of this question, I am going to explain you how we make notes. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, टक्कर के मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक पूरा सेशन लिया हुआ है आपका ज्योग्राफी का, कैसे नोट्स बनाता है ना. बट ब्रीफली लेट मी टेल यू, you should make notes of two important topics, resources and industries. Contemporary aspects you are going to cover through current affairs. Physical geography you are going to revise even for mains examinations. Don't make notes for physical geography. It is very vast. It is concept based, so try to understand the concepts. Notes you should make for, we can say that, resources and industries. And you should have 1-page note for each resource, 1-page note for each industry. And these notes should be through maps. Question, syllabus topic itself says distribution of resources. So it is expected that you draw the map, like the resources of coastal areas. The student who will draw the map of India's coastal areas and locate the resources in that map will get 1 mark extra. ये जरूर है. Geography demands diagrams and maps. Understood? Those who are going to show the direction of Purvaiya by drawing the map, they are going to get 1 mark extra. वो बोल रहे थे ना, आप क्या लिखोगे इसमें? Draw this diagram, draw this map. Okay, this is going to be very effective and fetch you more marks. So that's why practice diagrams and map. Okay, these 1-page notes on one side of that A4 side, A4 page, map should be there. On other side, important data, whatever the points you are going to write, दूसरे पेज पे होना चाहिए. This is how you should make notes for resources and industries. This is going to be last minute revision notes for your mains examination. इसी को रिवाइज करना है एग्जाम से पहले हमें. Okay, brainstorming of applied question. This is how the Takkar mains program at Lukmaan IAS is well helpful. The variety of question that we covered in 3 tests, almost 3 tests we had in Takkar test series, right? And then the GS test series after prelims in phase 3 of Takkar test. So you are going to have 50-60 such geography related questions written in the test series. Along with that, the model answers and discussion, 1-to-1 mentoring, feedback. ये applied questions हम वहां पे पूछते हैं. इससे आपका brainstorming हो जाएगा. Okay. Then along with that, if suppose any geographical phenomenon is in news or concept is in news, you should try to understand its impact, consequences. When we say applied, how it is having impact, cause and effect relation. Okay, so that aspect you should brainstorm. Okay, especially climate change and global warming. Every year UPSC will ask one question related to impact of climate change on various, we can say, landforms or flora and fauna, other geographical features. ये सारा आपको ready रखना है.
ठीक है, करंट अफेयर्स के थ्रू. देन राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, ऑफ कोर्स इट इज, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं कि इसके बिना तो अभी मेंस एग्जाम तो आप नहीं क्लियर कर सकते हैं. राइटिंग प्रैक्टिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैनॉट कीप द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इनसाइड योर माइंड. ठीक है, आपको लिखने आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड यू शुड बी एबल टू स्ट्रक्चराइज अकॉर्डिंग टू कमांड ऑफ द क्वेश्चन. ये सारी चीज, एंड दिस इज वेयर अगेन टक्कर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट. आई कैन क्लियरली सी कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे बढ़ रहे हैं हर एक टेस्ट के बाद में, when they have this one-to-one mentoring session and thereafter they implement the feedback given by the faculty, it is going to help all the students. So those who let's say have not joined yet, you can think about this Takkar Test Series program. It is continuously till your interview stage we have this coverage for this Takkar Test Series, right? Lastly, which resources should be referred, because this video is going to be watched by the newcomers also. ठीक है, तो उनको तैयारी करने के लिए रिसोर्सेस कौन से यूज करने चाहिए ज्योग्राफी के लिए? ऑफ कोर्स 11th and 12th standard NCERT. If you are reading geography for the first time, read from 6th standard to 10th standard first, and thereafter 4 NCERTs of 11th standard and 12th standard. 2 NCERTs of 11th standard deal with physical geography, 2 NCERTs for 12th standard human and economic geography. Very clear? Now this 12th standard human geography वाला जो है, उसी में वो human development, economic development बहुत सारा fodder मिल जाएगा. NCERT का importance. Okay, right. Then Lukmaan IAS class notes. Yes, in our geography batch, foundation batch, in depth we can say that the dictation is given by me in the classroom itself. ठीक है, तो स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी का, उसमें लिखने में बहुत आसानी होती है आपको. फिजिकल ज्योग्राफी का जब क्लास में कॉन्सेप्ट हो या कोई भी चीज जब एक्सप्लेन की जाती है तो. देन वन मोर थिंग जो मैंने अभी बोला, रिसोर्सेस एंड इंडस्ट्रीज कहां से करना है, बिग क्वेश्चन, because NCERT is inadequate. Last year they asked question on the natural resource, rubber producing industries. It is not given in NCERT. Rubber producing countries कौन से है, क्या है? Okay, so for that what we have to do, we have to prepare these notes from geography optional book. If you are having one friend who is having geography optional subject, उनसे आप DR खुल्लर बुक ले सकते हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी का बुक है. ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए ये बाइबल होता है. ठीक है, तो आपने उनसे लेना है, ये 2 चैप्टर का जेरोक्स करके लेना है. इसके लिए बुक मत खरीदिए, और दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है वो बुक से. इट इज वेरी, वी कैन से इन डेप्थ, इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर GS ज्योग्राफी. ओके, सो यू मेक नोट्स out of this resources and industries. Then Lukmaan IAS ED classes, just now I told you its importance for current and contemporary development. The Hindu and Indian Express, either of it you can use for newspaper. ठीक है, especially for contemporary development. Climate change से हर हफ्ते आर्टिकल आता है द हिंदू में, अलग अलग एंगल से. ठीक है, if the, let's say COP, now in November COP will happen, throughout month there will be, every day there will be article on climate change. ठीक है, सो यू प्रिपेयर फ्रॉम दैट इटसेल्फ. करंट अफेयर्स वहीं से तैयार करना चाहिए हमने. ठीक है, एंड देन वेबसाइट और मैगजीन, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड रीड डाउन टू अर्थ. यू कैन विजिट द वेबसाइट इटसेल्फ, और योजना इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट हेल्पफुल, बट लार्जली फोकस ऑन दिस डाउन टू अर्थ. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड फॉर ज्योग्राफी? It was very easy, I would say, this year compared to last year. Last year it was very difficult for students to deal with geography section, है ना? Yes. Now let's talk about environment section quickly. It is too quick to see the syllabus also. 3 ही word लिखे हुए हैं syllabus में. Preferred topic, yes, one student is asking which are the preferred topics for UPSC from geography section. So I would say preferred topics, instead of that I would say that the more emphasis is given by UPSC on which section? Natural resources. I told you no number of questions कहाँ पे ज्यादा पूछे है? Natural resources से, तो आपको वहां पे ज्यादा फोकस करना है. Distribution of key resources. Now from the environment section, let's talk about these syllabus topic.
conservation, environmental pollution and degradation, EIA, environment impact assessment. Okay, so based on these, let's have a trend analysis. Okay, this year UPSC has asked questions which are linked to both science and technology and environment section and disaster management and environment section. कैसे हम बात करेंगे उस बारे में, ठीक है. Now have a look at this trend. आपको दिखाई दे रहा है 2 questions 10 marker, 1 question 15 marker past 2 years. But this year what they have done, 1 question 10 mark, 3 question 15 marks. Okay, so total has gone beyond 50 now. Generally the questions 35 marks, 35 marks, 25 marks. Now this year weightage 55 marks for environment section. Now many people will think कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक का है. नो, साइंस एंड टेक का नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द कार्बन इमिशंस. Okay, the technology it is asking electric vehicles, but it is talking about how it is going to reduce the carbon emissions, how it is having comparative benefits than the petrol and diesel engine vehicles, traditional vehicles. हाँ, साइंस एंड टेक का है. कैसे? हाँ, बट नहीं, बट टेक्निकल चीजें लिखोगे या इसमें क्या लिखोगे बताओ आंसर में? नहीं लिखेंगे ना. दैट्स व्हाई you will write that it is clean, we can say it is not emitting the air pollutants, one thing. Then the other pollutants, when we talk from the aspects of like the health aspect, you will write. ठीक है, तो इसलिए ये environment angles है. And syllabus topic environment pollution. Okay, so this one some students will say that the sea level rise and its impact, disaster management से question है. That's why I was telling you blend किया है उन्होंने, ठीक है. तो ओवरलैपिंग है या फिर स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट कि ये इसका क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है. बायोफ्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसका क्वेश्चन है ये? हाँ okay, yes, online students, those who are watching this discussion, you can also give response in the comment box. बायोफ्यूल्स वाला क्वेश्चन साइंस एंड टेक का था या एनवायरमेंट का था? एनवायरमेंट. हाउ? व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज आस्किंग द प्रोसेसेस ऑफ डिराइविंग द बायोफ्यूल्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आर दिस प्रोसेसेस पार्ट ऑफ एनवायरमेंट सेक्शन? इट इज पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइंस का पार्ट है. दे आर आस्किंग प्रोसेसेस. So there we will write this how bioethanol is derived through fermentation process, or how biodiesel is derived through transesterification process. ये लिखना था वहां पे, right? So that's why students find it a little bit tricky. So 55 marks. Let's see the questions and let's say syllabus topic कहाँ से पूछा है उन्होंने. किया है. Yes, we discussed this just now. Okay, all these things are told. तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग किया हुआ है. कुछ पार्ट में उन्होंने एक एस्पेक्ट पूछा है, सेकंड पार्ट में उन्होंने. Look at the questions and nature of questions. See, oil pollution, was it in news in recent times? कहाँ पे हुआ था? Yes. Okay. हाँ हाँ, कब हुआ है ये? ओके, सो कैन वी, ठीक है, 2022 का था या फिर 2020-21 में कई सारे ऑयल स्पिल्स हुए थे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस एज अ काइंड ऑफ लेट्स से व्हाट यू कैन से स्टैटिक. व्हाई? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से एज सच बड़ा ऑयल स्पिल कुछ हुआ नहीं है जो आपके मेनस्ट्रीम न्यूज़पेपर कवर करे. ओके, एंड लुक एट द नेचर ऑफ क्वेश्चन. इट इज प्योरली स्टैटिक इन नेचर. What is oil pollution? What are its impact on marine ecosystem, and in what way particularly harmful for country like India? So it is not demanding current development. ठीक है, तो that's why I call it static and basic.
आपको पता होना चाहिए ऑयल स्पिल, ऑयल पोल्यूशन क्या होता है, हाउ डज इट इम्पैक्ट स्पेशली मरीन इकोलॉजी, हाउ डज इट इम्पैक्ट द मरीन इकोसिस्टम. And thereafter India, coastal, we have we can say that long coastline and how it impacts the coastal areas. You can talk about the livelihood of the people living in the coastal areas depends on fisheries sector. Fish are affected because of this oil spill. Along with that, the tourism destination, of course it is affecting the tourist destinations also. ये सारी चीजें आप बात कर सकते हैं यहाँ पर. नहीं, oil spill is something that is happening due to concentrated release of oil on large scale at a particular point. ठीक है, unintentional also, okay, but we can say that it is large scale. ठीक है, जो आप ड्रेनेज और इसकी बात करते हैं इफ्लुएंट्स की, हाँ हाँ, yes, we can call it when it is having large scale release of that oil. ठीक है, generally it is controlled, okay, ठीक है, जो ड्रिलिंग वाला होता है, okay, स्पेशली एक्सप्लोरेशन के टाइम पे होता है, बट देयर आफ्टर दे कंट्रोल दिस स्पिल. ठीक है, so generally oil tankers, those commercial oil tankers, when they are actually resulting into oil spill, तो बहुत ज्यादा होता है वो. ठीक है, and oil spill is very problematic. Why? If it is not dealt in initial few hours, spread हो जाएगा ना ये. एक बार स्प्रेड हो गया तो वो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम. वी कैन नॉट मिटिगेट दैट इम्पैक्ट, एंड दैट्स व्हाई द अर्ली आवर्स इमीडिएट रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, वी कैन से दैट. व्हाई? बिकॉज जब कोस्टल बर्ड्स होते हैं या फिर हम फिश बोलते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन का इतना इश्यू नहीं है, बट व्हेन दिस फिश इज डाइंग और फिश इज taking that, then the coastal birds are also eating those fish. कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि पोल्यूशन नहीं, बट अनवांटेड चीजें उनके बॉडी में बढ़ रही है इन अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट. हाँ, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. यस, ऑक्सीजन का है, लाइट पेनिट्रेशन कम हो जाता है. द कोस्टल बर्ड्स जो होते हैं, मरीन बर्ड्स, वो उनके फीदर्स जो है हेवी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑयल, देन दे आर नॉट एबल टू फ्लाई. ये सारी चीजें आप बात कर. फाइन, सो लेट्स नॉट डिस्कस इन डिटेल. एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वेरी प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. वी नो दैट वी आर कंटिन्यूअसली एम्फेसाइजिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो इट इज इन न्यूज इन लास्ट फ्यू ईयर्स. वी कॉल इट एज कंटेम्पररी एस्पेक्ट, करंट एस्पेक्ट. ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट इज सेइंग दैट the key benefits they offer compared to traditional combustion vehicles. ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए how it works electric vehicles. So you can write the simple points here. यहाँ पे generic content ही आएगा सारे स्टूडेंट्स का. जैसे अपना combustion engine है जो, उसकी efficiency better होते compared to ना carbon powered थर्मल प्लांट से ज्यादा बेटर एफिशिएंसी होती है. तो ये बेसिकली जो सिटीज के जो पोल्यूशन है इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं विलेज में. So we have to also understand and write it later on that we have to derive that electricity from renewable energy sources. वो इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं. हाँ हाँ बिल्कुल. शुरू में हम of course we are dependent on coal fired thermal power, but we are also focusing more on transition towards renewable energy. No, the electricity that is derived from renewable energy is beneficial here. So we have to understand this. ठीक है, we can mention that in later part, but it is related to environment pollution and degradation. You can see that 3 questions are related to environment pollution and degradation. Okay, this one, National Wetland Conservation Program. Wetlands, in past also in 2017 there was question related to wise use of wetlands and the Ramsar sites, Ramsar Convention. ठीक है, तो पास में पूछा है तो आप रेडी रहिए. We also prepare this for prelims examination. Government initiatives, conservation related. National Wetland Conservation Program is rather merged with National Lake Conservation Program, and now it is Conservation Plan for Aquatic Ecosystem together. 2013 में ये merge किया गया था, right? And different kinds of measures like rejuvenation, let's say measures related to wetlands are undertaken.
for we can say different wetlands in the country. The second part is purely factual. Name few of India's wetlands of international importance. If you mention the recent one or the prominent wetlands, be it Chilika Lake और एक दो natural लिखिए, एक दो man-made लिखिए, variety लाने के लिए उसमें भी, ठीक है. So this is second part is we can say factual. The first part is static in nature, government initiative. So it does not require any conceptual understanding. ठीक है, इसमें कोई concept वाला aspect नहीं है. Then intergovernmental panel, first statement तो ऐसे ही लिखा हुआ है. Second statement में पूछा है actual question that what would be its impact in India and other countries in Indian Ocean region. Now it is very specific. First statement geography का जो question था, उन्होंने बोला tropical countries के food security पे क्या impact गिरेगा. This one is asking India and Indian Ocean countries. If you write anything, any example outside this, so that means you are not reading the question. ठीक है? So sea level rise and its impact. Why they are asking? Largely the developing and underdeveloped countries are lying in the Indian Ocean region. No, island countries are lying in the Indian Ocean region. तो उन पे ज्यादा impact गिरने वाला है. Most dense populated countries are lying in the Indian Ocean region. Bangladesh, India. So all these are densely populated regions. ठीक है? तो वो सिर्फ इंडिया का नहीं, बाकी भी एग्जाम्पल लिखिए उसमें. ओके, इंडियन ओशन बोला है तो. सो वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सी लेवल राइज से क्या क्या होता है आप सबको पता है कि कोस्टल फ्लडिंग इज देयर, इनंडेशन, एंड वी कैन से सी सॉल्ट वाटर इंकर्शंस, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट वाटर विद द ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ये सारी चीजें लिख सकते हैं आप उसमें. ठीक है, फाइन. तो again it is related to environment pollution and degradation. It is environment degradation aspect. ठीक है, syllabus topic and all. Fine, now you have understood. So can we say that they were attemptable? Of course, as compared to Kyoto Protocol and Gothenburg Protocol, last year they asked very specific information was required. These are general, so they were attemptable. So I would tag them as moderate difficulty level. ठीक है, some of them are easy of course, but for the first timers it can be moderate also. This is demanding factual information. So for those students, ये नए students को नहीं पता, 2-3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, ये 2-3 प्रीलिम्स के टाइम पे नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान जो आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, बीट शंकर IAS, PMF IAS, तो उसमें बहुत रिवीजन कर लिया होगा, कुछ ना कुछ तो याद आता होगा, है ना. फाइन, ओके. We at Lukmaan IAS, of course, deal with all these topics. जैसे ED है, oil pollution वाला, ठीक है. At that time, in 2021-20, that time many oil spills have happened, major oil spills. We had covered as a ED topic here, ठीक है. And then ED test question also you can see here. In the light of recent instances of oil spills, discuss the impact of oil spill on the environment and give the remedial measures. Impact ही पूछा हुआ है इस बार भी उन्होंने. ठीक है. Now how do we prepare for this year's examination 2024? Clear understanding of concepts and climate change related phenomenon. Okay, be it global warming and its impact, और बाकी जो environment से related है आपका syllabus topic है, ठीक है, be it ecosystem वाला है. Last year they asked very simple question related to carbon cycle. Do you remember? Biomass से related. It was related to carbon cycle. So that's why I'm telling you concept related aspect. Although this year they ask oil spill and all, but yes, we read about this oil spill when we read about the standard books and all environmental issues. Now prepare small notes on all important environmental issues. पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज, डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसका एक पेज नोट होना चाहिए. और वो जो कर रहा है वो ऑयल स्पिल वाला भी किया होगा. जो एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में तैयारी कर रहा है तो वो ऑयल स्पिल के बारे में भी करेगा. ओके, सो प्रिपेयर 1 पेज नोट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, गिव रिसेंट इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स देयर, करंट अफेयर्स से वहां पे लिख के रखिए. ठीक है, ऑयल स्पिल कहां पे हुआ है अगर आपने लिखा होगा नोट्स में तो आप आंसर में लिख सकते हैं. ठीक है. मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड programs related to conservation.
like they ask the wetland aspect. In future they can ask related to like rivers, water resources and their we can say that rejuvenation, river pollution से related वो पूछ सकते हैं, ठीक है. So government initiatives, we were expecting some wildlife related, cheetah introduction and all these things happened, no, तो वो छोड़ के सब पूछ लिया यूपीएससी ने. जो पूरा साल स्टूडेंट चीता चीता कर रहा होगा, बट यूपीएससी ने दूसरा ही पूछ लिया. हाँ, ना प्री में ना मेंस में कहीं पे भी नहीं पूछा. फाइन. बी अपडेटेड विद द करंट डेवलपमेंट, स्पेशली क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक ईवीज और ग्रीन हाइड्रोजन, इट इज इन न्यूज, और इवन बायोफ्यूल्स, ये भी न्यूज में है, ठीक है. ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 हमने ईडी में रिसेंटली कवर किया है. हाँ, ठीक है. व्हाट रिसोर्सेस, इट इज वेरी स्पेसिफिक. 12th standard biology, last 4 chapters. 11th standard chemistry, environmental chemistry. क्यों important है ये environmental chemistry? Yes, wetland question can come in GS1 also, geography part. ठीक है, geography का भी part है वो. Environmental chemistry. Last year there was question on photochemical smog. Do you remember? Again, very specific phenomenon was asked. Photochemical smog. Gutenberg protocol was related to photochemical smog. अब ये phenomenon explain किया है ये NCERT के chapter में. सर बोल रहे कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारे लिए शंकर IAS बस, उसी को 10 रिवीजन देंगे, उसी को हम एग्जाम में यूज करेंगे. बट उससे पहले NCERT तो पढ़ लो, है ना. इट इज वेरी वेरी बेसिक, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, सो दिस वन. देन ऑफ कोर्स इन क्लास आल्सो वी हैव डिक्टेशन. फाउंडेशन बैच स्टूडेंट्स कैन डील विद दीज क्वेश्चंस. जेनेरिक क्वेश्चंस है. ईडी क्लासेस आर देयर. न्यूज़पेपर द हिंदू एंड एक्सप्रेस. आई वुड से फॉर एनवायरमेंट सेक्शन हिंदू इज बेटर देन इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है. Then magazine Down to Earth, again very important, relevant. Website Ministry of Environment and UNEP, IUCN, IPCC, इनके रिपोर्ट्स आते हैं कई सारे, ठीक है. इनकी समरीज पढ़नी है. रिपोर्ट ऑफ कोर्स बहुत लंबा होता है, राइट. सो ट्राई टू रीड देयर समरीज, ठीक है. क्विकली लेट अस गो थ्रू द लास्ट पार्ट, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. देयर आफ्टर पॉलिटी सोसाइटी सेक्शन विल बी टेकन बाय अभिजीत सर, ठीक है. तो इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस, डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस. अगेन आई वुड से अटेम्प्टेबल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड लाइंस पे सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है. सो अगेन आई डिवाइड द सिलेबस इन 4 पार्ट्स. लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, देन इंटरनल सिक्योरिटी challenges फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, challenges due to communication network, social media and all these things. Then we can say that money laundering, then organized crime and linkages with the terrorism. Fine. Disaster management का syllabus सबसे छोटा है. Disaster and disaster management. Let me tell you, all the questions also relate to this syllabus. क्योंकि syllabus क्या बोल रहा है? Disaster management. The question will be either asking about disaster, causes of disaster, consequences, or it will be asking management of that disaster. That's why the syllabus disaster management. Straightforward questions होते हैं, ठीक है. Now weightage, this one is one important part of GS3 paper. Consistently 50 marks are allocated to internal security, consistently. Okay, so you can see that 2017 onwards, 2 questions from 10 marks, 2 questions from 15 marks. Every year UPSC is asking 50 marks questions from internal security. So in GS3 paper, after economy, 100 marks for economy. After economy, this is the important section. ये आपको पता होना चाहिए. And also less efforts, more marks. जितना इकोनॉमी के लिए वास्ट पढ़ना पड़ता है आपको, तब जाके आप 100 मार्क का डील करते हैं. इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस टॉपिक और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस करके जाओ, कवर हो जाएगा. अगेन यू हैव टू मेक नोट्स फॉर ऑल दोज इंपॉर्टेंट इश्यूज, चैलेंजेस, ठीक है. डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ही क्वेश्चन था, डैम्स वाला, ठीक है. तो आई टोल्ड यू दैट सी लेवल राइज, दैट इज नॉट डिजास्टर मैनेजमेंट.
एनवायरमेंट से क्वेश्चन है वो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस, देयर नेचर क्विकली, ठीक है। डायरेक्ट सिलेबस टॉपिक, the internal security challenges from external state and non-state actors, and development and linkages between development and spread of extremism. Now we know that in Jammu and Kashmir, militancy in Jammu and Kashmir is linked to this one, development and spread of extremism. From that angle only it is asking question. Even in past there was question related to this, humanitarian aspect of security forces or administration, how it is more effective than the force to establish peace in the valley. इसी से क्वेश्चन है, देखिए। ओके, सो हार्ट्स एंड माइंड्स, हाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट स्पेशली, you have to write after 2019, after reorganization of Jammu and Kashmir, how different interventions by the present government is, be it employment generation program, be it investment in the infrastructure, tourism sector, roads development, bridges, all those rail links, ठीक है। तो इससे कैसे वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, ये सारी चीजें बात करनी है। यस यस, दैट इज ऑल्सो गुड। सद्भावना, ठीक है, जो मिशन सद्भावना या ऐसे कुछ तो जो है आर्मी इंप्लीमेंट करता है, जो ह्यूमैनिटेरियन फेस जो फोर्सेस का दिखाई जाता है उसमें, राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इंटरवेंशंस, सो डेवलपमेंट रिलेटेड इंटरवेंशंस लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फोर्स वाले नहीं। एनीथिंग? ओके, सो फाइन। सो करंट इसलिए लिखा हुआ है, कंटेम्प्रेरी या करंट, क्योंकि ये आपको रिसेंट वाले लिखने हैं, जो भी लिखना है इसमें इंटरवेंशन। देन इट वाज इन न्यूज बट नॉट इन लास्ट 1 ईयर, लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर हमने देखा है कि ड्रोन्स के थ्रू इन्होंने पाकिस्तान से कैसे आर्म्स और बॉम्ब वगैरह ये किया हुआ था बॉर्डर एरियाज में, है ना। हाँ, तो ये इंस्टेंसेस बहुत सारे अभी रिसेंट टाइम में हुए हैं। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन, ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड बाय द external state and non-state actors to drop the arms, smuggling the drugs, and we can say that FIC and fake Indian currency notes, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। Measures being taken to tackle this threat. We are also using technology, okay, to detect these drones along the border and take measures, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी थी। Security challenges and their management in border areas, ठीक है। तो ये सारा, देन व्हाट आर द वेरी प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट को यहां पे चैलेंज था कि हाउ टू राइट इन 250 वर्ड्स। व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया, वेरी वेग, सारे लिखेंगे क्या? और ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। गिव आउट रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, कितने सारे एजेंसीज है, एनआईए है, एनसीबी है, या कौन सा है अपना ईडी है, या फिर आईबी है इंटेलिजेंस वाला, ठीक है। बट वी हैव टू राइट द मोस्ट प्रोमिनेंट, 4 लिखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी मोस्ट प्रोमिनेंट, कौन सा है? इंटरलैंड टेररिज्म, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड द 4th यू कैन राइट ईदर नक्सलिज्म, ठीक है, नक्सलिज्म लिख सकते हैं, या फिर ड्रग मेनेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेजर वाले ये लिख सकते हैं, फिर साइबर वाला भी लिखेंगे, ऑफ कोर्स साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम्स जो है वो वाला भी लिख सकता है। बट वन कैन सिंपली मेंशन द रिमेनिंग एंड एलैबोरेट द इंपॉर्टेंट वंस, सो दैट यू आर गिविंग मैसेज टू द एग्जामिनर, मुझे सब आता है, मेरे पास टाइम नहीं है, स्पेस भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड पार्ट इज अगेन यू कैन टॉक अबाउट 2-3 इंपॉर्टेंट, जैसे IB है, NIA is there, and thereafter NCB, Narcotics Control Bureau is there, ED is there, serious economic frauds के लिए हमारे पास separate investigation agency है, ED is there, okay, so you can write about them. Major sources of terror funding in India, बस mention करना है यहाँ पर आपको, major sources of terrorist funding. So this can be that money laundering वाला aspect, हवाला वाला money है, or we can say extortion money, kidnapping, then arms drug smuggling,
drug smuggling from the organized criminals, human trafficking, drug trafficking, illegal wildlife trafficking. All these are sources of terrorism funding. Nowadays, the cyber frauds, financial frauds, this is the new kind of funding being done for the terrorism. Getting this? नहीं समझ रहे? ठीक है. सेकंड पार्ट देखिए करंट अफेयर से कैसे लिंक किया है. दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस नो मनी फॉर टेरर हैपेंड इन नवंबर मंथ. सो इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लाइट में ये डिस्कस करना है आपको. बेसिकली सेम थिंग दे टॉक हियर, स्पेशली द एमर्जिंग सोर्सेस ऑफ फंडिंग, न्यू सोर्सेस ऑफ फंडिंग, लाइक साइबर फंड, साइबर जो क्राइम्स के थ्रू. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जो मालवेयर और लेट्स से अटैक्स होता है, या फिर डिनाइल ऑफ एक्सेस वाले. डिनाइल ऑफ एक्सेस, कोई एक इंपॉर्टेंट फाइल्स है, आपका डेटा है, तो वहां पे वो क्या करेगा, रैंसमवेयर अटैक करेगा, डिनाइल ऑफ एक्सेस, एंड देयर आफ्टर दे विल डिमांड द एक्सटॉर्शन मनी. ठीक है, या फिर जो मनी डिमांड करेंगे उसको डिक्रिप्ट करने के लिए. इस तरीके से नया सोर्स अभी आ रहा है. टॉकिंग अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट, डैम फेलियर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रोफिक, स्पेशली डाउनस्ट्रीम साइड, रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी. Various causes of dam failure, give 2 examples of large dam failures. अभी रिसेंट वाला एग्जाम्पल तो ककाओ, हाँ लीबिया तो बाद में हुआ, पेपर के बाद में हुआ ना, क्या ड्यूरिंग हुआ? पहले हुआ है, 1-2 दिन पहले हुआ है. ठीक है, तो मे बी स्टूडेंट्स लिखने लिखा होगा, किसी ने लिखा नहीं होगा, बट दैट इज गुड एग्जाम्पल. इंटरनेशनल ऑल्सो कहाँ लिखा है? इंडिया का नहीं लिखा है ना, तो कोई भी लिख सकता है. हाँ, कखौजा डैम कौन सा जो था, वो जो फेलियर हुआ था वहां पर. सो बेसिकली ये क्वेश्चन उस एंगल से बनाया होगा. यूक्रेन, जस्ट दीज आर एलिगेशंस, ऑफ कोर्स अटैक हुआ था, दीज आर एलिगेशंस, बट वट एवर इट इज, द कॉजेस वी हैव टू टॉक, एंड इन दैट वी कैन राइट मैन मेड एंड नेचुरल, द मोर स्ट्रक्चर्ड आंसर. ठीक है, नेचुरल कॉजेस यू कैन टॉक अबाउट लाइक एक्सेस रेनफॉल. लीबिया वाला जो है, एक्सेस रेनफॉल हैपेंड इन शॉर्ट टाइम पीरियड. दीज डैम्स कुड नॉट होल्ड दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर. वो है ही नहीं उसके लिए वो डैम्स, इतना पानी ये करने के लिए. We can say due to even the mismanagement. Yes, we can talk about that also. Yes, in detail we can discuss later, but even in the Hindu analysis we had talked about no money for terror forum जो है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि objectives and all जो क्वेश्चन में पूछा है वही हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में. So whatever the current affairs वाला जो एस्पेक्ट है we can prepare from that. How do we prepare this? Again, I tell student that 1-page note for each and every issue, challenge that we are facing, prepare that. In-depth preparation of all the challenges that we are facing. जब भी अभी मैंने 4-5 नाम लिए, वो challenges major है. Money laundering 2-3 साल बाद, हर 2-3 साल बाद क्वेश्चन आता है. But every alternate year they will repeat Naxalism, insurgency in Northeast India, militancy and terrorism. Terrorism हर साल आता है generally क्वेश्चन. ठीक है. Then keep a tab on government measures to deal with internal security challenges. First 2 questions this year. What was the command? Government measures being taken. So that means it is a very important part for internal security. Basically GS3 में हर चीज के लिए गवर्नमेंट मेजर्स रेडी करने चाहिए. ठीक है, बी इट इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, हर चीज के लिए गवर्नमेंट मेजर्स तैयार करना चाहिए. ठीक है, ओके. सो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दिस पेपर? नाउ यू हैव अंडरस्टूड. Make small notes for each type of disaster, its causes, consequences, recent instances and the measures, remedial measures, or we can say that preparedness aspect. हर एक डिजास्टर का आप इस तरीके से तैयार करिए. एंड आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट दैट इंटीग्रेट दिस नोट्स विद द GS1 ज्योग्राफी नेचुरल हजार्ड पार्ट. एक ही तो है, सेम इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर एवरीवन? इसके सोर्सेस क्या है क्विकली? आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रेड दिस बुक ऑल्सो. जो बेसिक बुक है मार्केट में आज के टाइम पे. ठीक है,
आईपीएस अशोक कुमार, उनका ही बुक यूज करते हैं, सारे इश्यूज अच्छे से बेसिक इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ ऑल दिस सिंपल लैंग्वेज में कवर कर चुका है। सो एक बुक सफिशिएंट है, ठीक है। देयर आफ्टर यस ईडी क्लासेस, क्लास नोट्स, दिस वन द हिंदू न्यूज़पेपर, एनडीएमए वेबसाइट and Vivekananda International Foundation website. Experts on the international relations, diplomats, internal security, they actually deal with very good, write very good articles, debates उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। So any question related to these topics? Okay.